people, welcome back to another video. Today's video is about legal rights you must know as a citizen. Moving on to the introduction. Legal rights are established and maintained by the government's legal framework, allowing for reinterpretation or amendment. They are not universal, varying across states, countries, individuals and evolving over time. Legal rights जो है वो government frame करती है और उसको maintain भी करती है और कई बार उन legal rights में changes भी आते हैं और ये जो लीगल राइट्स होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं, वो सबके लिए नहीं होते हैं, वो हर एक स्टेट, कंट्री और इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं और उसी पे डिपेंड करते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. द अथॉरिटी टू सबमिट FIR. In India, citizens have the legal right to file an FIR for a cognizable offence, and police officers must not decline to register it. Failure to do so can result in the officer's prosecution and punishment as per the Indian Penal Code and Supreme Court rulings. तो इंडियन सिटीजन्स के पास ये राइट होता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर ये करने से रिजेक्ट करता है या मना करता है, देन दैट पुलिस ऑफिसर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पनिशमेंट. ऑन टू द नेक्स्ट राइट, द राइट टू रिक्वेस्ट अ रिफंड. The Consumer Protection Act of 1986 allows consumers the right to a full refund for dissatisfaction or inability to use paid services. Notably, labeling no exchange or refund on bills is both unlawful and unethical, and seeking legal advice is recommended. Yes, you heard it right. हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें रिफ़ंड मिले अगर हम जो चीज़ परचेज़ किए हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, और जो भी लोग ये लेबलिंग करते हैं या नो एक्सचेंज और नो रिफ़ंड, दिस इज़ वेरी अनलॉफुल एंड ये अनएथिकल भी है. सो वी कैन seek legal advice and ask for some legal help in such cases and get a refund. Moving ahead, women's right while arrest. Under the Criminal Procedure Code, women generally cannot be arrested between 6 p.m. and 6 a.m., with rare exceptions. Additionally, male police officers are not allowed to arrest women, protecting this legal right. तो ये जो right है वो women's के लिए है specially, and in this जो women हैं उनको arrest नहीं कर सकते हैं 6 p.m. से 6 a.m. के बीच में, and only female police officers can arrest them. Sometimes there is exceptions. Moving ahead, legal right to sue if a traffic officer steals your car keys. Under the Motor Vehicle Act of 1988, individuals have the right to file a legal procedure if a traffic officer steals the key from their vehicle. Seeking legal advice from a lawyer is recommended in such cases. एक legal right है, if any police officer, कोई भी police officer अगर कार की keys ले लेता है आपसे, if he takes away your car keys, please consult a lawyer, you know. Our next right is right under the Maternity Benefit Act of 1961. The Maternity Benefit Act of 1961 prohibits the termination of a pregnant woman by any firm, and violation can result in a maximum penalty of 3 years in jail. This legal right extends to employees in both the private and public sectors. Maternity Benefit Act of 1961 के अंदर अगर कोई फर्म है जो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो प्रेग्नेंट वुमेन अगर उनके ऑफिस में है या जॉब कर रही है उनके ऑफिस में, तो वो उनको जॉब से नहीं निकाल सकते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको पेनल्टी हो सकती है 3 years जेल की. सो आवर नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू फ्री लीगल असिस्टेंस. Every citizen should be aware of the right to free legal assistance established under legislation corresponding to Article 39A of the Indian Constitution. This provision ensures that individuals who cannot afford legal representation receive free legal aid services from the government. Specifically उन लोगों के लिए है जो लॉयर की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट उनको ये राइट दी है कि वो फ्री लीगल हेल्प ले सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट. Moving ahead to the last slide, which is cylinder blast. If the fuel cylinder blasts through the cooking of meals, then the fuel company is liable to pay rupees 50 lakh to the sufferer as compensation. To say this compensation, shoppers must lodge an FIR to the closest police station and submit it to the involved fuel company. So in case cooking के टाइम पे अगर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है तो जो फ्यूल कंपनी है वो लायबल होती है कि वो आपको कंपनसेशन दे ₹50 lakhs की, और ये करने के लिए पहले आपको FIR करना पड़ता है पुलिस स्टेशन में और उस FIR को सबमिट करना पड़ता है फ्यूल कंपनी में. दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग
and don't forget to fight for your rights. Also, don't forget to subscribe, hit the bell icon, and don't forget to like and share.